So this we've discussed about fraternity, the principle of fraternity. This we have taken up. Inclusive beginning. So in its judgment, Supreme Court a liberal, expansive view that is certain to resonate in debates to come. I think it is related to the same theme जो अभी हमने in detail discuss कर लिया. I think यहाँ पे there's no another new dimension to it. सब कर लिया हमने discuss. The main grounds of the challenge before this was that the presence of this section 6A violates the right to conserve the culture of indigenous people of Assam. So ये भी अगेन एक चैलेंज है जब हम बात करते हैं और चैलेंज टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू पर्टिकुलरली कि माइग्रेंट्स में जो लोकल पॉपुलेशन है लिविंग इन दी असम रिजाइडिंग इन असम दे बिलीव कि उनकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड कंपटीशन, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, जॉब क्रिएशन में हो, तो दैट इज ऑल्सो वन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. उसके लिए ही वी आई थिंक असम अकॉर्ड आया था 1985. तो आर्टिकल 29. So majority rejects this argument by adopting a multicultural and pluralist interpretation of the Article 29, rejected the interpretation that could be used to entrench our cultural exclusivity. तो जैसे हम बोलते हैं unity in diversity, so that aspect has been upheld by the Supreme Court. So article aims to conserve the culture of any group of citizens. So it is not just the already residing population and the citizens group, but conserving them for all the citizens, but does not prevent simultaneous existence of any other culture. तो prevention हम नहीं करते हैं, तो it is example of coexistence also. So Uttar Pradesh, when we're talking about the development, so particularly this is in context of IT, ITS services hai, and electronics in India. So it is proactively advancing this infrastructure in these three sectors, establishing itself as a significant player in India's technological landscape. So chahe like HCL ho, having their company and base there, this is one of the major, like we are trying ki UP becomes a hub for this. तो एग्जाम्पल्स में लाइक सब्सिडीज दी जा रही है, रिइंबर्समेंट प्रोग्राम्स हैं, फ्लरिशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स. तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट जब हम मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में पीएम मित्रा स्कीम इज देयर, तो ग्लोबल जाइंट जैसे सैमसंग, वीवो है, ऑल दे आर committed to supporting Make in India initiative. So इस तरीके से we'll be able to reduce our import dependence, particularly electronics में, and at the same time we can boost our exports. So industry friendly policies is what we can say being formulated by the state of Uttar Pradesh. So we can say that they have led the way in incorporating technology and innovation. मतलब ये हम ये factors की बात करें, क्या हमें चाहिए, what are the prerequisites if we want any state or any region to be a major attractor of FDI in this sector. So incorporating technology and innovation into governance, policy execution and service delivery. So ये keywords हैं. So semiconductor industry या फिर data centers, electronic manufacturing, ये different themes हो गए जैसे हम बात करते हैं हमने sessions में. And we are already investing rupees 1.25 lakh crores in phase 1 for semiconductors. Phase 2 के लिए we have designated $10 billion. So made in India, designed in India chips, crucial steps towards achieving that goal. So बाकी सारी schemes are data center parks, so e-district portals, so digital technology is helping us, IT UP1, government promoted incubators. जब हम innovation promotion की बात करते हैं, तो यूएस के लाइक जो भी recent agreement हुआ था regarding semiconductor chips manufacturing, तो we have signed agreement with Bharat Semiconductors, 3 EDTech and US Space Force. तो इन तीनों के बीच में trilateral एक agreement हुआ है. तो डिजी लॉकर में भी लाइक उत्तर प्रदेश इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ डिजी लॉकर सर्विसेज इन इंडिया. सेमीकंडक्टर पार्क है, यूपी's फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क टू कम अप नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो हब एंड स्पूक मॉडल क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, दिस इज द एग्जांपल फॉर इट. So what is the new click to cancel rule announced by US FTC?
So click to cancel rule is it will make it significantly easier for the consumers to cancel their subscriptions and memberships, make companies liable to face the civil penalties for complicating the cancellation processes. मतलब वो बहुत settings में आपको अंदर जाके उसको ढूंढना पड़ता है, actually आपको visible नहीं है, और चाहे subscription की जब बात करते हैं तो वो home page पे ही available होता है. So this is again when we're talking about the regulation of the OTTs particularly. So us direction may we see this step, and overall when it comes to again the protection of consumer rights in this growing digital arena. So this should be again uniform तरीके से. I think it should be applicable globally for all the OTTs which are functioning. Time and money both. It will save both the things which are crucial resources. So 4 issues in the Assam verdict. This is regarding same section 6A. So does the parliament have the power to make law regulating the citizenship is the first one. So legal scheme of granting citizenship for those who migrated from Pakistan. This is under Article 6 and 7 of the Constitution. I think Article 5 se leke 11 tak it is related to citizenship in the Constitution. True. Article 6 and 7 are only meant to determine citizenship at the commencement of the Constitution, that is 26 January 1950. और जो section 6A है, it deals with those who are not covered by the constitutional provisions. Then Article 11 की बात की जा रही है, तो Constitution under which the Parliament can make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related to it. Apart from this, entry 17 of the union list के अंदर we have citizenship, naturalization and aliens as the subject. Then another aspect is, does section 6A violate the right to equality? ये हम अभी बात कर चुके हैं. Does section 6A facilitate external aggression by allowing the illegal migration? तो ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं already कि we respect and we allow every group of citizens to follow their cultural practices. Article 29 की अभी जो हमने बात करी. Then Article 355 यहाँ mentioned है. So the law cannot be challenged for violating Article 355, which is an emergency provision under the Constitution. And does granting citizenship to migrants violate the rights of Assamese people to conserve their culture? तो नहीं, ये नहीं होगा, ये हम अभी बात किए. So it is about coexistence and respecting each other's cultural rights. So that has been upheld. तो जैसे principle of fraternity की हमने बात करी. So it is on those lines. So यहाँ पे हम twilight zone देख सकते हैं. What is the twilight zone? So why researchers studied the marine temperatures in the twilight zone? So यहाँ हम ocean acidification की एक बात कर सकते हैं. With the retreating rate of glaciers, melted water comes more in contact with the carbon dioxide. It is more lighter, so it floats on the upper layer of the ocean. So more intermixing of the carbon dioxide makes it more acidic. उसका pH level और fall हो जाता है. So marine heat waves can lead to low oxygen levels in the water and reduce the nutrients. तो robotic divers को use किया गया that can go 2000 meters deep and resurface. Major findings was that deep ocean में जो eddy currents है rather than atmospheric factors, they are influencing the temperatures. So we can look more about these eddy currents. क्या होता है exactly? तो warmer oceans overall, they are leading to stronger eddy currents. And ये twilight zone also raise the concerns. तो दो aspect है, can search more about this. So कल ही हमने इस कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी इंडिया पाकिस्तान एंड क्रिकेट. तो क्रिकेट कैसे एज एडी करंट वो करंट होता है विच गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द मेन करंट. तो साइड का करंट है. मुझे लगा था कि एडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, वो एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो करता है रादर देन पासिंग फॉलोइंग द सेम पैटर्न या फिर होता है ना, तो एक्स्ट्रा जो करंट है उसको एडी करंट हो गया. वैसे ही इसमें भी है ऐसी कि व्हेन अ सेक्शन ऑफ वाटर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन करंट, इट इज सॉफ्ट लिव्ड, कुछ घंटे के लिए होता है और टेम्परेचर सैलिनिटी इफेक्ट करता है हर एक चीज का. ठीक है. स्मॉल सर्कुलर करंट.
हाँ, तो इनका भी मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, कैसे वार्मर ओशंस की वजह से इनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो क्रिकेट again as a symbol of soft power, तो can it really prove to again restore our relationship and again address जो concerns हमारे related to security, extremism and then again terrorism particularly. So state of play and what could happen in February. So यहाँ पे भी टॉकिंग अबाउट साइडलाइन, जैसे ये हम बात ही कर रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से, तो इंडियन क्रिकेटर्स हैव ऑलवेज हैड फैंस इन पाकिस्तान. So how we are leveraging this soft power game, players besieged, collapse of Pakistan cricket can be blamed on crippling administrative mess. So let's see in future की बात है how this is going to play a constructive role between India and Pakistan. So personal IT collections, income tax collections are higher than the corporate tax for second year. And in this, जब हम chronology की बात करते हैं, तो we have talked first is income tax, then we have GST, and third is corporate tax. तो यहाँ पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स का अगर हम सीक्वेंस देख रहे हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और टोटल डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है. तो टोटल डायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन क्लोज टू 19 लाख करोड़ होगा. आई थिंक दिस वुड बी इन दैट सेंस. एंड उसके बाद वी सी पर्सनल इनकम टैक्स और फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, बट इनकम टैक्स के बाद वी सी द जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स. तो surge in the direct tax to GDP ratio, share of direct taxes in overall economic output in the country has jumped to over 2 decade high of 6.64%. So this information is being given released by Central Bureau of Direct Taxes under the Ministry of Finance. So this is showcasing us how faceless IT system is proving to be successful, how we are seeing that easing of the compliance or ease of filing of the tax with the faceless IT IT system or the website that we have. So increased digitization has also helped us in preventing tax evasions at the same time. And जो government की thirdly amnesty schemes हैं, they're also proving to be successful in terms of disclosing the black money or the undisclosed income by the people. So all of that is leading to wider or widening of the tax base, which is leading to increase in direct tax to GDP ratio. So direct tax to GDP ratio में क्या signify कर रहे हैं, जैसे 6.64% है. So how much percentage of GDP actually we are driving out of in the form of revenue through direct taxes, वो उस चीज को signify करता है. सो कॉर्पोरेट टैक्स रेट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए हमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट और कितना कम करना चाहिए. अभी इंडिया में भी करंटली जो है, रिसेंटली इट वाज कट टू 22%. तो जब हम ग्लोबली बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो स्टिल एक हायर लेवल पे है. तो पहले 30% था एंड टैक्स रेट 15% वाज अनाउंस फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिक कंपनीज. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेज और मीन्स थ्रू विच वी ट्राई टू अट्रैक्ट मोर ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया. तो टैक्स बायंसी आता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो टैक्स बायंसी इज रिलेटेड टू कि हम टैक्स रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट. So that is related to qualitative increase. So growth rate of taxes in relation to economy's nominal growth rate has also increased. Higher level than 2 for tax buoyancy was last recorded in 2021-22. So earlier it was 1.18. तो एक तरीके से buoyancy level is above 2. So cost of tax collection एक दूसरा aspect है. तो this we can say again with the more digitization, digital technology, faceless IT systems जो हैं, that is also have been reducing the tax collection cost. So indicate कि कितना expenditure हो रहा है on tax collection as proportion of total tax collections being done. So it is falling to 0.44%. So increase in the collections was accompanied by increase in returns also being filed. Income tax return filers and taxpayers increase हुआ है. तो ये indicate कर रहा है कि tax base is widening. So subdued response from the the non-institutional investors and retail investors. तो India का largest IPO Hyundai से related Hyundai Motor India IPO है. Qualified institutional buyers
स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट वहां से हमें देखने को मिला है। तो आईपीओ इज रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट where the company list its share for the very first time in the capital market, and where people first you apply for IPO, and then secondary market you can trade and invest for longer term. So RBI bars four NBFCs, non-banking financial companies from loan sanctions. तो क्वेश्चन उठता है क्या एनबीएफसीज बेसल नॉर्म्स के अंडर कवर्ड है? तो यस, दे आर कवर्ड अंडर द बेसल नॉर्म्स। सो व्हेन इट कम्स टू, अगेन कल हमने बात करी थी ऑन सिमिलर लाइंस की अनसिक्योर्ड लोन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और द मेथड और द नेचर ऑफ ग्रोथ that NBFC wants to see cannot happen merely on the basis of by giving more unsecured loans and credit, because that at the same time increases the qualitative risk of might be, we can say, increased NPAs in future, more number of defaults in future, and also banks are also lending credit and loans to NBFC, so there can be the asset liability mismatch. So given that we see that RBI as a regulator, it is seeing how the changes are happening. So even NBFCs have to maintain the capital risk weighted assets ratio, tier 1 capital उनको maintain करना पड़ता है, provisioning norms जो उनको वो adhere करने पड़ते हैं। तो जैसे weighted average lending rate है, इंटरेस्ट स्प्रेड चार्ज। तो इंटरेस्ट स्प्रेड मतलब जितना ज्यादा स्प्रेड कम होगा उतना चांसेस या जो रिस्क परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट है वो कम होगा। तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन financial 2024 highest since financial year 2001। सो रेशियो हमने देख लिया 6.64%। सो टैक्स बायंसी, डायरेक्ट टैक्स बायंसी की भी हम बात कर चुके हैं, रिकॉर्डेड अबव 2। तो देख सकते हैं 2 के आसपास बहुत कम आया है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का शेयर ज्यादा है देन दी ओवरऑल अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं सेंटर के टोटल टैक्स रेवेन्यू में। तो गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड पेंशन टू गिग वर्कर्स बाय 2025। तो ये हम हमेशा बात करते हैं कि सेक्टर को और फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। ऑल्दो जो उसका अगेन मेन एडवांटेज है, लेवरेज है, वही फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम जो गिग वर्कर्स हैं उनकी वर्कर राइट्स को हमें फर्स्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए, देन उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑफ लेटली वी सी की इवन दे गो ऑन स्ट्राइक बिकॉज चाहे उनकी मिनिमम वेज हो या फिर अगेन वेज पे ही नहीं की जाती है टाइमली बेसिस पे। सो दैट इज द चार्म। तो इंश्योरेंस होगी, पेंशन होगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे, तो दे वुड बी मोर सिक्योर्ड इन अ वे। So e-Shram portal for generation of unique IDs. So the government has asked the aggregators to register the gig workers on the e-Shram portal, which is already functioning. So code on social security 2020. So वहाँ पे बात की गई है कि gig workers would be getting the benefits. Even जो 4 labor codes है उसमें भी हमने gig worker rights की बात करी है। So assigning them a unique ID to such workers based on which contributions per transaction वो deduct होंगे उनकी salary से। तो robust and comprehensive mechanisms for their social security. Crude oil import bill up 12% in the first half. This is again one of the spillover effects of the instability in the West Asia, the Central Asia, because of which we are seeing that crude oil prices are going up. Even OPEC is deciding to cut the output. So that is another factor which is fueling up the prices. India being import dependent, again, majorly close to 90% import oil we are importing. So what are the solutions? So we are looking for diversifying our crude oil importing countries. जैसे after the Russia-Ukraine war, we saw the share of Russia increased up till 40%. So now we are looking at Brazil here. And simultaneously, green energy transition may we are looking at sustainable fuels like hydrogen fuel is one aspect. So even there, cooperation between South-South is important. So OALP, Open Acreage Licensing Program is there, which will be signed in the Oil Fields Regulation Development Amendment Bill. It is expected to be passed in the upcoming session of the Parliament. And the government is also constantly engaging with the international oil and gas companies to boost domestic output.
सो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, क्या हमें उसका नंबर या जो क्वांटिटी है उसको और इंक्रीज करने की जरूरत है, गिवन वी आर सीइंग कि वल्नरेबिलिटीज और जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है विद टाइम, विद अगेन द सिचुएशन नॉट मूविंग टुवर्ड्स पीस इन वेस्ट एशिया एट द सेम टाइम. So upstream companies, they have produced 14.4 million tons of crude oil in the period. Declining trend in production can be attributed to maturing of the existing oil fields. So because it is again a fossil fuel, limited number में available है, तो again अगर वहाँ पे जो availability है वो एक point of time के बाद it will be coming to zero at certain point of time. तो maturing का मतलब वो है amid lack of new areas of production. So that is why green energy transition becomes very very crucial here. So petroleum planning and analysis cell जो है, they decide with the pricing. So Brazil deep water was one of the most attractive emerging areas and saw huge participation in bidding by the global oil majors, including Indian companies. Stagnant domestic output is a challenge. Rising import dependence is another challenge with geopolitical tensions. So even that is why we talk about why. So even they say like there was one question कि Venezuela is having the world's top oil reserves. So Venezuela के बाद we have Saudi Arabia जहाँ पे हम गवार field की बात करें, GHAWAR field. Then we have Iran, Canada and Iraq. So Central Asian economies again why they are going to be major, can say hotspots in future. India to be third largest economy by 2030 according to S&P Standards and Poor's. So third largest economy by 2030, India is poised to be so here by 2035, India will be cemented as the world's third largest economy, with Indonesia, Brazil ranking 8th and 9th. So global South countries, we are seeing कि the pace of economic growth is expected to increase in them. So that is why we even talk about they are going to be the major hotspots for even growth, or they're increased an important role overall in the global economic growth. So similarly, IMF has also projected the same thing. So here we see that firstly in terms of India's per capita income, at the same time, like currently we are at $2,400 per capita. So in this case, while we are growing, another challenge in front of us is the middle income trap. So as we say that when it is seen in other countries, like when the country is achieved 11% of the USA's per capita income, at that point of time, the middle income trap is seen that there happens to be systemic economic slowdown in the growth. So the countries remain trapped within that region. So we need to also ensure ki how we are also focusing upon that aspect. Apart from this, here like World Population Prospects 2024 published by United Nations. So India's population is projected to be again highest in the world, 1.45 billion, and it will peak at 1.69 billion in 2054. So managing again the how जैसे we talk about silver dividend और demographic winters की इस बार मेंस में क्वेश्चन था, तो using them as a leverage is important rather than seeing them as a burden. So this is only the first step. Investors will continue looking for improved market access. So जब हम again finance की बात करते हैं, तो we would be requiring finance for increased investment at the same time ensuring कि the productivity is increasing. So that is another challenge. And so here we can talk about the reforms in the multilateral development banks. That is another aspect. And rising demand to hinder the decarbonization. So in this case, India's ability to attract private investment and address negative spillovers from decarbonization, including जैसे negative spillovers decarbonization की वजह से job losses होगा because industries, जैसे यहाँ पे हम Schumpeter economics की बात कर सकते हैं, he talks about creative destruction. So एक तरीके से ये creative destruction होगा longer term perspective से, but short term में जो job losses hongi, it will be impacting the per capita income of the people or income instability hogi. So how are we going to deal with that? And even jo increased hame skills bhi chahiyegi with the more we can say investments and reforms coming up. So we are making progress in building the renewable capacity, fast growing economy. So ensuring workers in carbon intensive industry communities are not left behind.
This is not going to be easy. So Starlink and Amazon, they seek lower spectrum prices for the satellite communication. So Starlink and Amazon Kuiper. So in absence of the lower prices, they'll be compelled to offer their services in urban areas. So not reaching the far-flung areas. So this इसके around भी debate चल रहा है. जो ई ऑक्शन किया जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मेथोडोलॉजी, और कौन सा स्पेक्ट्रम बैंड ऑक्शन किया जाएगा. तो उसके ऊपर जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, इट इज लोअर, as in the absence of it, they will be compelled to offer only in the urban areas to keep the prices of satellite spectrums lower. It is expected. So Telecom Regulatory Authority of India's role is also crucial at the same time. And companies have emphasized on light touch regulations, predictable policy regime. So this is also it boosts the ease of doing business. सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स है, जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्शन होना चाहिए, सो दैट इट इज ट्रांसपेरेंटली एंड फेयरली डिसाइडेड. This we have discussed in detail. Section 6A. सो बिगेस्ट आईपीओ रिस्पॉन्स की अभी हमने बात करी. Hyundai Motor India's IPO of close to, we can say, 28,000 crores, India's biggest so far. तो इट इज रिफ्लेक्टिंग कि जो डेप्थ है इंडिया के स्टॉक मार्केट का, दैट इज डीपनिंग विद टाइम because of again increased participation of even the retail investors, or even the FPI inflows were seen incoming in India specifically after 2020. So it is true that much of the retail interest in the IPOs is being driven by the prospect of a listing pop. Listing pop मतलब कि जब ये stocks list होते हैं मार्केट में, जैसे अभी तो आईपीओ चल रहा है तो आप आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हो, तो एक डेट होती है विच इज एट द गैप ऑफ अगेन 1 वीक जब वो स्टॉक लिस्ट हो जाते हैं. तो इट इज ऑलवेज सीन कि जिस प्राइस पे स्टॉक लिस्ट होता है वो हमेशा एक प्रीमियम पे होता है. प्रीमियम मतलब एक हायर प्राइस पे. सपोज आपने आईपीओ सब्सक्राइब किया ₹44 पे और वो लिस्ट हो रहा है 120 पे, तो दिस इज अनबिलीवेबली हाई प्रीमियम. ये मेन इंटेंशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का आईपीओ को सब्सक्राइब करने का. जैसे लिखा है 135 प्रीमियम पे वो लिस्ट होते हैं कंपेयर टू जो उनका इशू प्राइस था. तो ये फिनोमेना और ज्यादा इंक्रीज हुआ है आफ्टर 2020. तो इट कैन बी अगेन बिकॉज ऑफ increased enthusiasm. Yeah, it is also related to at the same time the performance and the quality of the company that is getting listed. तो जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए रिसेंटली सेबी केम विद द रेगुलेशंस, बट उसका अभी तक हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है. तो वो भी एक नया चैलेंज इमर्ज हो रहा है कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली रेगुलेट इट. सो आईपीओज में रिसेंटली जो कंसर्न इमर्ज हुआ था, दैट इज कि जो स्मॉल कंपनीज है, जो स्मॉल कैप आईपीओज हैं, उसमें जैसे यहाँ पे हमने प्रीमियम लिस्टिंग की बात करी या लिस्टिंग पॉप की बात करी. सो स्मॉल आईपीओज के केस में हमें देखने को मिला है कि वो प्रीमियम पे नहीं, वो लॉसेस पे लिस्ट हो रहे हैं. तो उसकी वजह से अगेन मैनी ऑफ द पीपल दे आर गोइंग इनटू लॉसेस. सो गेम ऑन. तो गेमिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री पॉइज फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ. मेन फैक्टर्स क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड यूथ डेमोग्राफिक्स. तो strategic investment are needed in this so that India becomes again a global leader here. So global gaming revenues they are expected कितना grow हो जाएंगे. अभी currently $371 billion हैं, 503 by 2028, growing at compound annual growth rate of 8%. इंडिया का कितना ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू है? तो अभी करंटली इट इज 38,000 crore rupees, expected to grow to 66,000 crore rupees only from the gaming industry. सो रेगुलेशन ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री, इसके रिलेटेड कंसर्न था कि गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस दोनों के ऊपर 28% जीएसटी लेवी किया जाएगा. तो जो गेमिंग इंडस्ट्री थी अगेन दे वर प्रोटेस्टिंग और दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस decision regarding the regulation. So at the same time government के लिए भी adequate amount of tax revenues can be generated out of the gaming industry.
but again we need to regulate ki how it will be impacting the screen time or how it will be impacting again the eyesight or the non-communicable diseases, because you have to sit for longer hours. Sedentary lifestyle को एक तरीके से promote करेगा. सो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ये सिमिलर जो अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं भारती एयरटेल, ही सेड कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम शुड बी एलोकेटेड वाया ऑक्शंस. तो अभी जैसे एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस की बात करी वो ही मेथड अभी तक, तो दैट इज द डिसीजन की गवर्नमेंट वुड बी गोइंग फॉरवर्ड विद दैट. सो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हम यहाँ थोड़ा और सर्च कर सकते हैं. तो बाइजूज वर्थ जीरो टुडे सेज फाउंडर रविंद्रन. तो यहाँ पे जैसे वर्स्ट फाउंडर बाइजू को मिला, बेस्ट फाउंडर श्रीधर वेम्बू जोहो के लिए. मोस्ट ओवररेटेड फाउंडर है क्रेड के कुणाल शाह. मोस्ट अंडररेटेड फाउंडर है जेटा के भावीन तुरखिया. तो इट शो केसेस की सिंपली लाइक यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं व्हेन वी सी द केस स्टडी ऑफ बायजूस. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वाज वैल्यूड एट $22 billion एंड टुडे इट इज एट जीरो. सो एनसीएलटी आईबीसी का रोल इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने सक्सेसफुल रिवाइवल देखा या रेजोल्यूशन देखा इन केस ऑफ भूषण स्टील या एसर स्टील, तो सिमिलरली वी आर फोकसिंग की आईबीसी में भी और रिफॉर्म्स होने चाहिए. वी शुड हैव अगेन प्री पैकेज्ड लाइक नॉर्म्स होने चाहिए फॉर पर्टिकुलरली एमएसएमईज. हम जो प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी ओवरऑल कैपेसिटी डेवलपमेंट और उनकी बेटर ट्रेनिंग की भी बात करते हैं. And IBC should be more in sync in integration में. They should work with the asset reconstruction companies at the same time. तो ये 3 reforms की बात हम करते हैं और होने चाहिए. So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Ansarkari and stay tuned for further detailed videos in the upcoming sessions.